Okay, so this video will clarify any questions that you probably would have about your assignment. As you can see on your screen, that the assignment has two parts. One is the written part, that is the poster. Please do not make it on PowerPoint slides. It doesn't say to make any PowerPoint slides. You have to be a little bit creative. Use Canva. Or you can use a poster template in PowerPoint. It is up to you. You can use Access and any other software that you're aware of. Make sure that there are no spelling mistakes in it. Make sure there is no grammatical mistakes in it, and it is appropriate, right? It's ऐसा ना हो that you're writing about Wolf and the Lamb and backdrop पे sorry फूल बूटे और हाशिए लगे हुए रेलेवेंस होना चाहिए ठीक है और प्रेजेंटेशन पार्ट भी है now you're going to record and show your poster in the best way possible. This is your creative part. This is how you're going to showcase. Your face must be revealed. You should be making eye contact with the camera clearly, of course, but you must not script read. यानी कहीं से देख के नहीं पढ़ना है, right? And you must watch it before you submit, bete. And it should be at least 2 minutes or maximum 3 minutes could be there. Maintain eye contact. Be fluent. Do not sound like a mummified dead body. Dull mat sound करे. Presentation जैसा sound करे. Backdrop of your presentation should be appropriate. Um, uh, Other than that, there should be no voice appropriate. No voice distortion should be there. And मतलब ऐसा ना हो कि ना बेटे पीछे कोई गानों की आवाज आ रही है और पीछे बैकड्रॉप ठीक नहीं है आप सब्जी मंडी में बैठ के बना रहे हो दैट शुड नॉट हैपन बिकॉज इट हैज हैपेंड इन द पास्ट so be very clear about it otherwise बेटे it might get rejected so put your efforts in the right direction in the right manner submission has to be on Google Classroom by 18th March 11 p.m. um, how you're going to submit, what you can do is you can post the link to your video in the assignment section. जहाँ आप assignment यानी poster upload करोगे उसी पे comment section भी होता है relevant comment section वहाँ पर आप post कर दोगे ठीक है you can directly upload the video as well but usually because you guys have expensive phones तो वो GBs में चला जाता है तो that becomes a problem what you can do is you can upload it on Google Drive and share a shareable link with me with my email address. So only I will have access to it. This is the email that you need to give access to it. I'll just and make sure कि access हो. अगर मुझे access नहीं मिलती तो I will not be asking for it. I'll just give you direct zero for it. This is my email address जिसको आप access दे सकते हैं. और ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पर आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा अब देखिए क्लैरिटी से समझ लें जैसे अबरार को जो फेबल असाइन हुई है वो थेमेटिकली डिस्कस करेंगे अली जो है वो उसी फेबल को स्टाइलिस्टिकली उसके सिंबल्स कैरेक्टर्स मोरल मैसेज एंड फिगर ऑफ स्पीचेस को डिस्कस करेंगे सिमिलरली ईच वन ऑफ यू हैव बीन असाइंड समथिंग दैट यू नीड टू फॉलो ठीक है उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके रोल नंबर मेरे पास नहीं है लिस्ट्स आई डोंट हैव द लिस्ट्स येट और आई एम नॉट इवन श्योर दैट उमर शाह उमर और अहमद उस्मान एंड उस्मान हो सकता है ये चारों एक ही हों तो बेटे अगर आप चारों एक नहीं चार नहीं ये दो हो सकते हैं बच्चे अगर आप दो हैं तो आपने इसमें से एक एक ले लेना तो आई एम नॉट श्योर हु यू आर अनुषा जो है उनको पोएम असाइन हुई है नूर को भी पोएम असाइन हुई है और नताशा को भी द रेस्ट ऑफ यू हैव बीन असाइन दीज and make sure that you meet the deadline bete or take it as a fun part um, it is what it is you have to do it ना आपको करना तो है ही इसके अलावा क्या इम्पोर्टेंट है बस यही सब है कि आप जो मटेरियल इकट्ठा करें उसको दो बार जरूर पढ़ें एंड मेक इट yours like it shouldn't come across as if AI बोल रहा है उसको ह्यूमनाइज करे पता चले आपने खुद लिखा है because between you and I both of us we know what level of English you and I possess I have the very basic one and you have the very basic one so if you are going to speak in an artificial accent an artificial language that you do not possess the level of that will come across very badly तो बहुत natural रखे enthusiastic रखे so this is your assignment that I wanted to share with you and please submit it by deadline so that I can evaluate and give you feedback.